मैंने पहले जब स्कूल खोला तो उसमें 120 बच्चे आए थे पहला पब्लिक स्कूल में। उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, उसमें कोई क्लास सिस्टम नहीं था। ये सब बातें मैंने स्पेशली चैलेंज बच्चों से सीखी थी। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि 15 साल का बच्चा अगर नर्सरी में बैठना चाहे तो बैठ सकता था। अगर वो 4 साल का बच्चा इस काबिल है को 3rd ग्रेड में बैठे तो बैठ सकता था। उसमें कोई कोर्स की किताबें नहीं थी एज सच कि यही किताब पढ़नी है, क्योंकि ये बच्चे जो पहली जनरेशन आ रहे थे स्कूल में, मुझे ये ख्याल हुआ कि अगर इन पे हमने बहुत एकदम प्रेशर डाला तो ये भाग जाएंगे। जब आप इनको इतनी आज़ादी की आदत पड़ गई है, जहाँ जब जी चाहते हैं जिधर निकल जाते हैं, जब चाहते हैं पतंग उड़ाते हैं, जब चाहते हैं गिल्ली डंडा खेलते, तो इनको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करना है कि देखिए एक नई दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप अब तक आपने कभी कदम ही नहीं रखा। उस दुनिया में जब ये एक दफ़ा दिलचस्पी लेना लगे हैं, फिर ये नहीं जाएंगे हाथ से। तो वो उस दुनिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको उन्हीं के लेवल पे आना था। आज हमारे यहाँ 1800 बच्चे हैं और 8-9 साल हो गए हैं किले को, और हमारे एक 150 से लेके अब 600 तक पहुँच गए हैं हम किले में। और बच्चों में जो दिलचस्पी है पढ़ने में, वो इस वजह से आई है कि हमने डिवोर्स नहीं पैदा की उनकी दुनिया में और एजुकेशन की दुनिया में। हमने उन दुनियाओं को मिलाने की कोशिश की। ये फ़ायदा वो हुआ, सक्सेसफुल हुआ कि फिर चाचा नेहरू खुला, जो फिर 50 बच्चों से शुरू हुआ था, अब वहाँ 200-300 के करीब बच्चे। सबसे बड़ा विच इज़ माई आई थिंक माई हुआ यूँ था कि अलीगढ़ में बहुत सख्त राइट्स हुए थे तो वहाँ के शहर के कुछ ऐसे ख़ानदान जिनका सब कुछ लूट गया था, राइडिंग स्कूल के पीछे एक जगह थी चांदबाग, उसमें सेटल कर दिया था। अब वो ऐसी आबादी हो गई थी कि जो पढ़े लिखे थे नहीं, उनके पास कुछ कमाई का कोई जरिया नहीं बनता था, तो वो कहीं से भैंस चुरा ली, उसको काट के उसका गोश्त बेच दिया, कहीं से कुछ ले आए, ताश खेले, इस किस्म की आबादी थी जिसके सामने कोई मंजिल नहीं थी, ना उसको कोई रोशनी दिखाई दे रही थी कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वो चारों तरफ से यूनिवर्सिटी से घिरी हुई थी, तो वो ऐसी सख्त तकलीफ भी चीज़ थी कि मैंने कहा इसमें तो अगर कुछ काम नहीं किया गया तो ये कई जनरेशन इसमें ख़त्म हो जाएंगी और ये इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी, वो बिल्कुल चारों तरफ से घिरे हुए थे और कहीं निकलने का रास्ता नहीं था। तो वहाँ स्कूल जब खोला तो उसकी बहुत मुखालफत हुई। मस्जिद के जो मौज़िन थे वो मुझसे कहने लगे, अरे आप यहाँ स्कूल खोल रही हैं, यहाँ मस्जिद तक में कोई नमाज़ पढ़ना तो आता नहीं है, तो स्कूल कौन जाएगा। खैर वो 12 दफ़ा स्कूल खोला और 12 दफ़ा वो उन्होंने आके किसी ने फर्नीचर तोड़ दिया,
कभी ब्लैक बोर्ड उठा के फेंक दिए, कभी टीचर्स को स्कूल खोलने नहीं दिया, बच्चों को तंग किया, हर तरह से कोशिश की कि स्कूल नहीं खुले। तो मैंने सोचा घर घर जाऊं, बताऊं। फिर घर घर गए, टीचर्स गई घर घर, एक्सप्लेन किया कि भाई, और उसमें वही था कि जो मुसलमान उसमें एक हार्ड कोर वो था, हम बच्चों को, लड़कियों को नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे भाई, आप पढ़ाएंगे उनको तो हाँ पढ़ाएंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो अपने यार को खत लिखेंगे। मैंने कहा यार के अलावा भी बहुत सी ऐसी दुनिया में चीज़ें हैं जिससे वो कुछ कर सकती हैं, आप उनको भेजिए। तो लड़कों को भेजेंगे, लड़कियों को नहीं भेजेंगे। बहुत दफ़ा इस पे जाके मिले, लोगों से बात, गालियाँ सुनी, सब कुछ। एनीवे मैंने कहा खोलना तो है खराब, कुछ भी ये वो खोलेंगे। औरतें कुछ जो थी उनमें ये, उनको दिमाग में आई ये बात, और उन्होंने फिर हमारा साथ दिया। और मैं ये समझती हूँ कि मेरी सबसे ज़्यादा जो मुझे जो अल्लाह ने यहाँ कामयाबी दी, ये एक उसका इंडिकेशन था कि हाँ, अगर कहीं मेहनत करोगे या तुम्हारे ईमान सही है या तुम्हारी नीयत सही है, तो तुम्हें कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी। अल्लूर मदरसा है, और उसमें वहाँ के बच्चे शुरू में तो बहुत पिछड़े हुए थे और स्कूल के साथ नहीं वो कम्पीट करवा पा रहे थे, मगर नाउ देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस। हम चूँकि हम तालीम सारी मुफ्त देते हैं, कोर्सेज हम देते हैं, यूनिफॉर्म हम देते हैं, हर चीज़ हम देते हैं, हम उनसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप पढ़िए, तो उनको ज़रा मोटिवेशन होता है उसकी वजह से। जब इतना हमारे लिए करें तो हम इनको कम से कम पढ़े, तो उसकी वजह से वो मस्जिद बनाना, गिरजा बनाना बहुत आसान है। ये तो अब वो है, एक ईंटों का एक स्ट्रक्चर है, आपने बना दिया। एक स्कूल को बना के उसमें बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम करके और ऐसे करना कि वो चलता रहे, वो बहुत मुश्किल होता है। और हालांकि आपका मजहब शुरू हुआ है इक़रा बिस्मि रब्बिक का, कि पढ़ो अल्लाह के नाम पे। कोई मजहब ऐसा नहीं है जो इस बात को एम्फसाइज करता हो कि पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक रब समझ में नहीं आएगा, तब तक अल्लाह नहीं मिलेगा। मगर इसके अलावा हमको ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने हमको इतना दिया है, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम इंसान बने, अब अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अब पे बैक टाइम है, अब कुछ तो वापस करना चाहिए। आप कुछ तो दीजिए, कुछ तो ये कहिए कि हाँ हमको ये मिला है तो हम इतना तो वापस करें, ये हम अपनी तरफ से दान करें मुल्क के लिए। और अगर हम 2 बच्चों को भी बिठा के पढ़ा देते हैं, अपने घर ही में अपने नौकर के बच्चों को बिठा के पढ़ा देते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा दान है। तो वो ऐसा वो है कि वो जितना वो बच्चा पढ़ेगा, जितना आगे जाएगा, आप ही का उसको सवाब मिलता है, वो सवाब ही जारिया हो जाता है। इसको अगर हम वाकई महसूस करके चलें, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्योंकि वहाँ पे बेनतहा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे हाई परसेंटेज है, 10% है ऐसे मुसलमानों की जो बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, PhDs हैं, दुनिया भर के लोग हैं। अगर ज़रा सा भी ये एहसास हो कि हाँ वाकई हमारे ऊपर कौम का ये वो है, एक हमें ये एक कर्जा उतारना है, मुल्क का कर्जा उतारना है, इस तरह कि हम एक चिराग से दूसरा चिराग बनाए, दूसरे चिराग से, तो फिर अपने आप रोशनी फैलती चली जाएगी। हिंदुस्तान में जिस किस्म का काम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने सर सैयद अहमद साहब की तरह इस बात को अपना ईमान माना है कि अगर तालीम नहीं होगी तो किसी किस्म की तरक्की नामुमकिन है।
pleased to have with us Mr. Piyush Chawla of Vikas Publications, who is the publisher of the book. I request him to say a few words. I'm privileged to extend a warm welcome to our dignitaries, Mrs. Kaur, Mrs. Ansari, Amir. Vikas Publishing, in its long history of 45 years, has had opportunities to publish and be associated with many valuable authors and their written word. Freedom at Midnight by Dominique Lapierre Larry Collins, If I Am Assassinated by Zulfikar Ali Bhutto, Judgment by Kuldeep Nair, and many more. In the 80s, Vikas shifted its focus to educational publishing and continues to drive its vision of publishing value-added and high-quality textbooks from kindergarten through management and engineering. In this context, our current association with Al Noor Charitable Society to publish the book Colors of My Rainbow is very special. The Al Noor Charitable Society provides free education in an innovative manner to over 2,500 underprivileged kids and is an outstanding example of what determination and perseverance can achieve. The schools run by this society are a guiding light for all responsible citizens who wish to contribute towards the upliftment of the marginalized class but don't know how. And when a brilliant mind like Amir Khan decides to release the book, you know for sure that the book has substance and is going to be a super hit. Amir, I'm a huge fan. I've seen Three Idiots probably 10 times, and I almost picked up lines of Chatur's Chamatkar speech in my speech today, but it was a little too naughty and slightly appropriate for the occasion. And I often wonder to myself that there must be at least one thing where I'm as good as Amir, or maybe close. I thought about it, and I thought about it, and I could just identify one, that I'm a wee bit taller. Amir, we're absolutely thrilled to have you here. Your presence is extremely encouraging for all of us. A very special thanks to our author, Himani, and our editor-in-chief, Mrs. Veena Baswani, for the tireless effort to bring out this book in time under the able guidance of Nuria and Ma'am Salma Ansari, affectionately called as Ami. Thank you. Thank you. I now invite the author of the book, Mrs. Himani Verma, to speak on her inspiration for the book and about the book itself. Kaurji, Srimati Salma Ansari ji, and Sri Amir Khan ji. Esteemed guests, friends, and family, thank you for being here. A post-colonial critique, Edward Said, once spoke on the concept of the others. These are segments of society who most people like to ignore, to subjugate and not recognize. Theoretically, the book describes the concept of the others, the marginalized, migrant and underprivileged children, dropouts of our educational statistics, many of whom still don't figure in our statistics at all. The book is about empowering these children to be the difference themselves. The vision of recognizing and mainstreaming these children is where Mrs. Salma Ansari's journey began, and the book is on the exploration and understanding of her vision for education. In pursuing that vision, a dream was born, a dream which battled against the conservative, narrow-minded stronghold of people who believed that education was not required for their children. The change came when the women of the locality, victims themselves, stood up in support and took Mrs. Ansari's movement ahead. Today, in the 2,500 children in her schools, there is nearly 100% attendance, and the children love coming to school. The stories in this book are about discovering hope when there is nothing but despair, about finding light when there is only darkness, and about the triumph of education over the ugliness that is poverty, illiteracy, and ignorance. It is about the dreams in the eyes of these children and the opportunities education can provide them. I quote from the epilogue of the book, "Even in total wilderness, if you give people faith, they can create a meaning
And the best thing about creating a meaning is that one can begin to do it anytime. The book is also, interestingly, a description of innovative pedagogical strategies which can be successfully implemented for inculcating these children into the mainstream. Through simple but astute contextual strategies, which are detailed in the book, education has been made meaningful to these children. They learn math through marbles. They learn the planets through kite flying, methods which have worked and can work, not just for the children of Aligarh, where Mrs. Ansari has piloted her schools, but which can be replicated anywhere and everywhere across India and even in other developing countries. And finally, this book is about my own spiritual journey of being able to reach out beyond myself. A story in the book called For Saida describes the story of Saida, a little girl who was burnt to death by her in-laws. Like all other stories, this story is based on my conversations with the children of these schools. My initial reaction to this story was horror and recoil. Coming from the word of sanitizers, when you see children with matted hair and ragged clothes, that is your initial reaction. But ragged clothes, where I could listen to Saida's friends and see not just the horror that poverty can inflict, burning a girl child for dowry, but recognize their desperation and fear of a similar fate. I learned to see beyond the poverty of these children, into their eyes, their sorrows, and into their desire for a brighter future. The book is a description of that journey. I quote from the chapter in Ammi's words in the book. Education has immense power, and it is the only way to reach out to the knowledge that is denied to these children. It alone can usher in a better world for them. Thank you so much for sparing time to be with us today. I hope you enjoy reading the book. It is a journey from the heart, and if it brings alive for you the voices of those who need our support, I feel I would have done my job. Thank you. Thank you. Education has been a passion for Srimati Ansari. She has been involved in setting up centers of learning in Riyadh, Jeddah, and Abu Dhabi before she started the Al-Noor schools in Aligarh. I request you, ma'am, to please share your vision for education with the audience. Thank you very much. So many words of praise. I really don't know how to take it. I feel very humbled by it. 12 years have gone by, and when you look back, you feel that it was a lifetime. But it also seems as if it happened yesterday. I remember the image of a child drinking from a sewage pond haunted me as I came back from my riding lesson in the morning. I tried to push it away and say, what can I do about it? It's an image. I don't have any power to do anything about it. But that image persisted like a toothache.